let's talk about the best free sources that you can find for EPFO, for preparing for EPFO by yourself on your own. I have taken a lot of time to create this entire list. It's not a random list. I searched a lot of YouTube videos and I figured and I found and I realized that everyone is providing very basic uh, set of content, basic set of sources that are actually not doable in the next 3 to 4 months. It's just a waste of time to think and to believe that by covering NCRTs, you'll be able to actually cover the entire syllabus and crack the exam. It's just not possible because NCRTs take a lot of time to cover. You can't just read 3, 4 NCRTs in 4, 5 days and remember all of it. It's just not possible. So, although NCRTs and stuff like that, sources like that do help, but you have to be more uh, choosy in what you're using to read. And the good thing is that on the internet, you will actually find those specific topics, those specific books, those specific areas where you can get the sources that you actually need and that can help you prepare for this exam by yourself. And that is what I've done. I've put all those PDFs on this single page, and I'm going to discuss all those PDFs with you right here in the next 10 to 15 minutes. I would want all the students who are preparing by themselves to watch this entire session, understand all these PDFs. Why have I put all these PDFs here? Why have I put all these links here? What was going on in my mind when I was choosing and finalizing these sources? Okay, and they're also based upon the importance of the subjects. So let's start with English because in English has a lot of importance. 20 marks, 20 questions, almost 50 marks, very high importance. If you're weak in grammar, then Wren and Martin is the one that you use. I've put the PDF of Wren and Martin also, so you can simply just download the PDF and you can start using that. If understanding English is a problem, then there's a website that I recommend to all my students, and I also use it at times. It's called ingvid.com, short form of English videos. Okay, if I have to show it to you, let me just open it here. So Ingvid has an area at the top which says topics, and you can either work on your grammar, you can work on comprehension, you can work on pronunciation, you can work on everything, including vocabulary as well. So it's a beautiful website. Let's say I go to vocabulary. Now what I have to do is I have to select teachers because there are multiple teachers for the same subject. Let's say I want to learn from Adam. I don't know who he is, but let's assume that he's fine. So all the lessons which have been created by Adam in the past 4, 5, 6, 7, 10 years probably, and there are a lot of lessons, all of them are here now. Now, even if I start, you know, read going through all these lessons one by one in the next 10, 15 days, I will see a lot of improvement. So for understanding improvements, Ingvid is a good website. The third one is vocabulary. Now, vocabulary, there is one thing called as vocabulary pure and the other is vocabulary in use. Vocabulary in use मतलब जब आप vocabulary पढ़ते हो इंग्लिश में improve करते हो तो उसको use में किस तरह से देखना है. So I found this wonderful book by Cambridge University, if I'm not wrong. Let me just try and open it and see. One second. Okay, because I'm using the iPad, it takes some time at times to start downloading these books and everything. Okay. Okay, if I am able to anyhow show you, one second. Okay, I'm not able to open it right now, but it is available for download when you use it on your on your laptop. You can easily download it, so don't worry about that. So this one, vocabulary in use book, I found it very interesting and very useful because यहाँ पे जो भी vocabulary, grammar, comprehension पढ़ते हो उसका यूज एक्चुअल सेंटेंसेस में क्वेश्चंस में कैसे करना है वो यहाँ पे सीखने को मिलता है. एंड इफ यू जस्ट वांट अ लिस्ट ऑफ वोकेबलरी एंड वांट टू मग इट अप, मैंने उसकी भी एक वीडियो उसका भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल दिया है. ओके, लेट्स कम टू मैथ्स एंड रीजनिंग. सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग में प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो प्रैक्टिस बुक मैंने
अपनी यहाँ पे डाली हुई है बिकॉज आई नो दैट me and my team have created it, and it's actually a very useful book. You can also refer to various other books for maths and reasoning. You can refer to CAT books, you can refer to RS Agarwal books, various other books as well. Those are also decent. Okay. Coming to history. Now, I don't know, in maths and reasoning, there are a lot of YouTube channels, but I don't know which one to recommend and which one can you rely on. But I think students are smart enough to use a lot of banking teachers to understand maths and reasoning if they don't have conceptual clarity on it. Okay. History. There is a channel called as Harsh IAS. उसके मैंने हिस्ट्री में एंशंट हिस्ट्री के, मेडिवल के, मॉडर्न के, उनके प्लेलिस्ट यहाँ पर डाल दिए हैं. यू कैन very easily use them. They're very good. They're very long, they're very in-depth, but they're very good lessons. Okay. History books के लिए Spectrum publication is considered to be one of the best. So I would not recommend going here and there and wasting your time. You can simply rely on Spectrum publications. History is history is difficult. It's not easy because it's actually very long and vast. तो history में आपको effort लगाना पड़ेगा. Industrial relations. Now in industrial relations, if I have to show you, let me just see if I can show you the entire list. It will become easier for you. तो अगर मैं industrial relations खोलता हूँ तो there are more than 16, almost 20-25 labor laws and different kind of laws. So labor laws की बात करें तो there are 16 such laws: Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Industrial Employment Act, Trade Union Act, Factories Act, Industrial Dispute Act, Child Labor Act, Interstate Migrant, Contract Labor, Payment of Bonus, Construction and Mines Act. And then there are 4 codes which are actually supposed to have replaced all these acts, but all these acts are still asked in the examination. And then there are Social Security Acts. तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, मैंने वो डाला हुआ है. सबसे पहले तो इंडिया कोड की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे इजीली, बट वहाँ पर आपको ये सब बिल्कुल रॉ वाइट पेपर फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको समझने में प्रॉब्लम होती है. द सेकेंड एरिया दैट यू कैन गो ऑन इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट. वहाँ पर भी आपको ये सब मिल जाएंगे. तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट खोलूँ, ऑन द टॉप यू विल फाइंड हियर एक्ट्स एंड रूल्स. सो यू कैन ओपन दिस और आपको यहाँ पर सारे एक्ट, सारे रूल्स मिल जाएंगे. सो दिस इज अ गुड एरिया, but the problem again is these are all white papers without any simplification, so understanding them becomes difficult at times. Finally, there is ICSI book, which is one of the best that can be used by you. Industrial Labor and General Laws, उसका PDF मैंने यहाँ पर डाल दिया है. आप उस PDF को यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं. ओके, सो व्हेन यू open this book, you will see that all these acts that I just discussed are available here, number 1, and all these acts have also been simplified. Now it is opening. Okay, Industrial Labor and General आप नीचे देख सकते हो. So now it is opened. अब यहाँ पे देख सकते हो सारे acts available हैं. Let me just show you. तो ये इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज हैं, 70 मार्क्स लिखा हुआ है. फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. तो यहाँ पर ऑल दो पूरा एक्ट कवर्ड नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज मिलेंगे जो नॉन कवर्ड है, बट जो कवर्ड है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से कवर्ड है. सो इट्स अ गुड बुक, यू शुड यूज इट. अकाउंट्स पे आते हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ये पेज है ICAI का. आई रियली लाइक दिस पेज. इसमें पूरे अकाउंट्स के बेसिक्स कवर्ड है, बट द थिंग इज सब कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म में कवर्ड है. तो अगर आपको अकाउंट्स पढ़ के समझ आ रहा है, देन दिस इज अ वेरी गुड वेबसाइट. इट कवर्स द एंटायर अकाउंटिंग नीड्स. पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम. फिर आपको कोर्स या कुछ और पे रिलाई करना पड़ेगा. ऑडिट एंड इंश्योरेंस के लिए मुझे 2 बड़े अच्छे सोर्सेज मिले. ऑडिटिंग की एक किताब है, अगेन ICSI की. इसमें ऑडिट के बेसिक्स बहुत अच्छे से कवर्ड थे. अकाउंटिंग भी है, बट अकाउंटिंग क्योंकि ICAI का सोर्स मैंने बता दिया तो वो यहाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं. उसके बाद इंश्योरेंस के लिए NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. वापस आते हैं ICSI पे. अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो अकाउंटिंग है पूरा, यहाँ पर ये पूरा ऑडिट है. इतना ऑडिट काफ़ी है क्योंकि ऑडिट से क्वेश्चंस भी कम आते हैं. इंश्योरेंस के लिए भी NSDL का मुझे एक ये PPT मिला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसमें मेजॉरिटी इंश्योरेंस कवर्ड था, तो मैंने डाल दिया है. 60 पेजेस का है, इसमें मेजॉरिटी चीज़ें कवर्ड हैं. जो नहीं समझ आ रहा गूगल कर सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के लिए लोग बोल देते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ लो. भाई लक्ष्मीकांत 1000 पेज की है, उसको पढ़ने में 1000 दिन लगेंगे आपको, कोई फ़ायदा नहीं है, अभी यू डोंट हैव टाइम. तो 132 पेजेस की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मुझे एक बुक मिली,
छोटी सी किताब है, ऑफ कोर्स बहुत डेप्थ में नहीं कवर किया है, सब कुछ ऊपर ऊपर से किया है, बट इट इज़ समथिंग दैट अलाउज यू टू एटलीस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चंस आते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एरिया देयर दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम। साइंस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोर्सेज अच्छे नहीं मिले। 8th 9th 10th की एनसीईआरटी तमिलनाडु की मुझे बेस्ट लगी, क्योंकि साइंस के बेसिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी साइंस की पढ़ लो। ज़्यादा ही डेप्थ में जाना है, रवि अग्रहारी सर की एक किताब आती है साइंस की, वो पढ़ सकते हो, बट अगेन वो ज़्यादा ब्रॉड है और ज़्यादा डेप्थ में भी है। कंप्यूटर्स का वेटेज काफ़ी अच्छा है। कंप्यूटर्स के मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स मिले। अब कंप्यूटर्स में डिवीजन इस तरह से है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स और सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, इन 3 एरियाज से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। तो इन तीनों एरियाज के मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में कुछ ओवरलैप्स मिलेंगे आपको कि यार 2 पीडीएफ्स में दोनों में हार्डवेयर डिस्कस्ड है, बट हर एक पीडीएफ में मुझे कुछ यूनिक चीज़ें मिली, इसलिए मैंने सारे पीडीएफ्स यहाँ पर डाल दिए हैं। कंप्यूटर्स को इग्नोर ना करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे, और कंप्यूटर्स से इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिए कंप्यूटर्स की। तो कंप्यूटर्स पे 6-7 दिन लगाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट हो गई। अब ये पूरा पूरा लिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई थिंक मेरी टीम ने एक फॉर्म डाला है, जैसे वो फॉर्म फिल करोगे आपको ये लिंक या फिर ये पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स, यू कैन यूज ऑल दीज लिंक्स, अपने पास रख सकते हो। टोटल 9 डिविजन्स मैंने क्रिएट किए हैं, बट इन 9 डिविजन्स में मेजॉरिटी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कवर्ड है। ओके, so this is all for the sources that you can use for free for preparing for the upcoming EPFO exam. Keep studying hard. All the best. Bye bye.